Overpopulation refers to an undesirable condition in which the number of existing human beings exceeds the actual carrying capacity of the earth. It has many causes which range from a decline in death rate to early marriages and many more. The ill effects of overpopulation are quite severe. Overpopulation is increase in population of humans over a threshold level, where natural environmental resources can't sustain it. It is a huge economic as well as environmental issue because the natural resources fail to fulfill human needs per capita. The concept is not new. In 1798, Malthus gave this concept of population catastrophe. But with time, the technology and human knowledge proved that this was not that right, and populations kept increasing beyond that threshold level, which was given in his paper in 1798. But when we look at the resultant issues of industrial revolution, human technology development, and we look at the natural resource implications of our development, so we come to a conclusion, that is a neo-Malthusian conclusion, that we can't keep reproducing more and more population without damaging natural resources. In Pakistan, we have 225 million population, and one of the youngest population as well, as because around 60% people are less than 30 years of age. So this can be a resource as well as a huge threat. In unchecked population, we can't make economic planning, but if we have some sort of capacity building, training, and investment in education, then this population with limited future growth can be a resource for our country. It also causes more diseases that become harder to control. Next up, we have the issue of unemployment. Moreover, it rises due to overpopulation. There is more number of people than job opportunities. As a result, unemployment gives rise to the crimes like theft and more. We also have pandemics and epidemics which happens due to overpopulation. It is because overcrowded and unhygienic living gives rise to infectious diseases. Another ill effect is malnutrition and starvation. When there are scarce resources, these diseases will likely to be on the rise. Most importantly, we have shortage of water, which make it tougher for people to get access to clean water. Similarly, lower life expectancy also happens because of the boom in population, especially in less developed nations. In the recent, we have witnessed faster climate change as nations continue to develop their industrial capacities. Overpopulation is a developing curse nowadays in our society, not only in Pakistan as well as all over the world. और इसके बहुत सारे इससे created issues हैं, जिसका ये आप कह लें कि it is precursor to most of the societal, economic and political issues जो आजकल raise हो रहे हैं, specifically हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में. आप देख सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन से क्या है कि लैक ऑफ प्लानिंग सबसे पहले, विच इज़ अ प्रिकर्सर टू ओवर पॉपुलेशन, एंड ओवर पॉपुलेशन इज़ अ प्रिकर्सर टू ऑल दीज सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स नहीं हैं. आई वाज लिसनिंग टू एन ओपिनियन दैट देयर आर लाइक 1000 पेशेंट्स एंड दे हैव जस्ट वन डॉक्टर टू अवेल. इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें अगर, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर काफ़ी रश लगा हुआ है, और जिसकी वजह से जो हमारा मेरिट है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का, उसको वो डिवैल्यू हो रहा है. Another solution be government incentive. Many governments of the countries already have various policies which relate to tax exemption for curbing overpopulation. For instance, some waive a certain part of income tax for married couples with 1 or 2 children. All in all, overpopulation is no less than a curse then poses a permanent threat to the development of any country. It is essential to stop the flood of population. In order to do that, one must indulge in proper family planning and creating balance in society for a better world. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन
उस मुल्क की इकानमी के अंदर अहम रोल प्ले करती है। कुरान मजीद में है कि हर बंदे को, हर मुल्क को, हर सोसाइटी को अपने रिसोर्सेज के अंदर रह कर गुजारा करना चाहिए। तो जो पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं कि वो किसी भी मुल्क का एक वाइटल रिसोर्स है, वो रिसोर्स भी हो सकता है और वो मुसीबत भी बन सकती है। रिसोर्स इन द सेंस कि अगर आप चाइना को देखो तो चाइना भी एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री था। उसकी जो 100% पॉपुलेशन है लेबर फोर्स के अंदर, उनको वो यूटिलाइज करता है, ठीक है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी अगर उन्होंने कोल पावर प्लांट लगाया तो जो प्रिजनर थे वो प्रिजनर को ले के आए और यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया। पाकिस्तान भी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो ओवर पॉपुलेटेड हम किस हवाले से कहते हैं कि जब अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक ना रखते हों, ठीक है। आपने एक सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। उसी हम चीज़ को अगर लेके आगे चलें तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की एक जीडीपी है, ठीक है। उस जीडीपी क्या होती है? इट इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन अ ईयर, जो कि उसी पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दें तो पर कैपिटा इनकम बन जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त उन मुल्कों की लाइन में शामिल है जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत थोड़ी है। वो उसी इनकम के अंदर रहकर आपने अपनी फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। बेसिक ह्यूमन की क्या हैं? 3 नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक। तो अगर वो इनकम आपकी लो है तो ये फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, इस पर आपको कहीं ना कहीं किसी एक पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है फूड। पाकिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट के एस्टीमेट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि 40% से ज़्यादा लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन के उनको ज़िंदा रहने के लिए जो मिनिमम फूड अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं 2 वक्त की रोटी, वो The first one is that natural resources deplete at a faster level. Our planet can produce only a limited amount of water and food. Thus, overpopulation causes environmental damages include deforestation, pollution, etc. We construct more and more residential areas, residential localities, and we clear our agricultural land in order to make new housing societies. Similarly, there is in the degradation of the environment which happens because of the overuse of resources like coal, oil, gases and more. As a result, the quality of air also get affected in this manner. We have seen recent that Lahore, the city of Pakistan, is declared the polluted city in the world. I was listening to an opinion that there are like 1000 patients and they have just one doctor to avail. इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें अगर तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर काफ़ी रश लगा हुआ है और जिसकी वजह से जो हमारा मेरिट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का उसको वो डीवैल्यू हो रहा है। नंबर ऑफ़ एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, जॉब के ऊपर प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, जॉबलेस लोग ज़्यादा मार्केट में हैं, PhDs जो हैं वो काफ़ी जॉबलेस हैं and they are not getting the related jobs as well even if they do. For example, agriculture है, there are like soil scientists, agronomists हैं, economists हैं, entomologists हैं, लेकिन उनको compromises करने पड़ते हैं बाहर जाने के लिए. They have to go like there is only one way like marketing and stuff in different pesticide companies. Traffic के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लोग जितने ज़्यादा हैं, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतनी ट्रैफिक, बाइक्स, मोटर कार्स, और लोग प्रेफर करते हैं रादर देन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब उससे क्या हो रहा है? रश बढ़ता जा रहा है। अदर देन दैट पोल्यूशन कॉज हो रही है, ठीक है। हवा के अंदर काफ़ी ऐसे केमिकल्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं फ्रॉम द एग्जॉस्ट एंड इनकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आज से 40-50 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी वो सामने आ रही हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है।
बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन के। इवन यूनाइटेड नेशंस के जो अपकमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके अंदर सबसे मेन फोकस है वो फूड सिक्योरिटी है। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है एंड पीपल आर प्लानिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ओवरकम दिस इन द कमिंग फ्यूचर। अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से एक जो बड़ा हॉट इशू है वो फूड सिक्योरिटी है। हो क्या रहा है, वक्त के साथ साथ जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी डेवलप हो रही हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, स्पेसिफिकली इन द एरिड रीजन्स लाइक पाकिस्तान वेयर वी लिव, के ड्राउट्स का ऑनसेट ज़्यादा हो गया। अगर बारिशें होती तो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। There are number of factors which contribute to the overpopulation such as lack of education, poverty, etc. that lead to overpopulation. There are many factors. The first one is lack of family planning services. Lack of family planning services is one of the major causes of overpopulation. In many developing countries, people do not have access to contraception and other family planning services. As a result, they continue to have children until they have the desired number of sons and daughters. ओवर पॉपुलेटेड हम किस हवाले से कहते हैं कि जब अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक ना रखते हों। ठीक है, आपने एक सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। उसी हम चीज़ को अगर लेके आगे चलें तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की एक जीडीपी है। ठीक है, उस जीडीपी क्या होती है? इट इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन अ ईयर, जो कि उसी पॉपुलेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दें तो पर कैपिटा इनकम बन जाती है। तो पाकिस्तान इस वक्त उन मुल्कों की लाइन में शामिल है जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत थोड़ी है। वो उसी इनकम के अंदर रहकर आपने अपनी फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। बेसिक ह्यूमन की क्या हैं? 3 नीड्स: फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। Remember, the Earth planet is the only life existing planet. If we have only planet Earth, then it is our responsibility to save it and to conserve all the available resources. We need to save our environment and to make it suitable for us and for our coming generations. Like every problem has some solutions, the solution to overpopulation is we can overcome overpopulation by empowering women, by promoting family planning, make education entertaining, government incentive for the people who use family planning, and by adopting one-child legislation. And if we want to conserve and to protect our environment, these are some measures we can adopt to save our environment. Thank you very much for students having me for this important topic. So we are just having a brief discussion on how the population is affecting our environment. So as we know that nowadays in Pakistan we have a severe issue of overpopulation, which has even increased from 23 to 30 million even. So we are facing a severe issue towards environment. So actually when we discuss the impact of this overpopulation and environment, we have to consider all spheres of environment. So we know that normally we have lithosphere, which is our soil, and we have hydrosphere, which is actually the water cycle, and we have atmosphere where we have gases. So all these spheres, they are being directly affected due to overpopulation. So when we consider the impact of this overpopulation towards our lithosphere, which is our soil, so due to overpopulation, urbanization is a big issue. People, they are moving from villages to the cities, and our fertile land, which was required for our agriculture purpose, unfortunately it is being converted into different residential and commercial colonies, so which is of course having negative impacts on our environment. And along with this, due to increased population, we are facing the issue of waste generation, which is even domestic waste, which is industrial waste,
and all these waste materials, they are directly polluting our natural resources and ultimately our reservoirs, which are our future assets. So this is another issue which we are facing due to overpopulation. And similarly, when we see the atmosphere due to this overpopulation, and when we have overpopulation, of course, to feed these people and for industrialization, we are emitting a lot of toxic gases, which we call as greenhouse gases, which are actually causing impacts, negative impacts, and we are facing the problem of climate change. So actually this climate change, which is due to these greenhouse gases, which is mainly carbon dioxide, which is methane, which is nitrous oxides, these are gases, they are coming through our industries, through our transport system. When we have more population, of course, transportation and these exhaust gases, they are increasing. And similarly, due to our anthropogenic changes and our agriculture practices, we are increasing day by day these gases, which when they accumulate in the atmosphere, of course, they cause climate change issue due to greenhouse effect. And as we have seen in our previous months, we have faced a severe disaster of flooding. This was also, we can connect this flooding with our population as we generate more greenhouse gases, and ultimately we are facing this issue of climate change. So of course we have these issues due to population, which is directly affecting our environment, which is actually our surrounding. And if we have to think for our future generations, we have to go for some mitigation strategies, which could be through proper management in population, their working areas, and of course the waste material which we are generating haphazardly. So I would suggest we have to go for some, of course, for the moment, adaptation strategies along with mitigation strategies, which can help towards minimizing the impact of population on environment. Thank you very much. Thank you. Okay, the overpopulation is population increasing in two ways. One is natural growth and second one is migration. So natural growth is also very high from the last 70 years. We are at the moment is ranking 5 around the world after India, China, USA and Indonesia. So at the moment our ranking in population is more than 220 million people at the moment. These are the actually a future threat for our environmental and food security issues. So actually due to this overpopulation, at the time of partition, our population is residing in rural areas more than 80%. Rest of the other 20% population in urban areas. At the moment, according to the fresh data, is 62% of population that is living in the urban areas, rural areas, and rest of the other is living in more than 38% in urban areas. So these rapid growth of population in urban areas, that is creating problem for our environmental, traffic, food security and housing issues. So these housing sector is growing rapidly as like mushrooms. So in the last 3 years there is more than 0.5 million housing sector developed in Pakistan. So due to this population growth and effect of this population growth, the housing sector, the green area is converted into
housing sector. So due to this deficiency of green areas, that is creating a problem of environmental issues. So not only environmental issue but also pollution in water pollution, noise pollution, that is a part of environmental issues. If we are not able to restrict especially the rural urban migration, so our cities are like making like a shrub areas converted into we are not able to develop urban areas until and unless we stop rural urban migration. So that is rural urban migration is a main cause of environmental issues. So our cities areas also the per person density rate is very high. So that is a one issue, biggest issue in our country's population natural growth and rural urban migration. Thank you. हम अगर बात करें कॉजेज़ की कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिन्होंने अपना ज़्यादा रोल प्ले किया है पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बढ़ने के अंदर, तो उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो गवर्नमेंट इन अटेंशन है। आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रैग्मेटिक जो सॉल्यूशंस या कोई प्रैग्मेटिक जो मेजर्स जो हैं वो पेश नहीं की। इसके अलावा जो है पुअर फैमिली प्लानिंग जो है विच इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। इसके अलावा इलिटरेसी यानी कि जो हमारी वेमेन हैं वो उनके अंदर एजुकेशन का ना होना भी जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा हमारी जो है इनस्टेबल इकोनॉमी जो है वो भी इसकी बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से पॉवर्टी आती है और पॉवर्टी की वजह से जो है लोग जो है वो इनएजुकेट होते हैं और अगर वो अनएजुकेट होंगे तो उससे फिर जो है वो जो उनके पास फैमिली प्लानिंग जो है उसकी एजुकेशन नहीं होगी तो इससे फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पॉपुलेशन जो है वो होगी। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि रिलीजियस जो हमारा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। आप यानी कि इसको कह सकते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स। इसकी वजह से भी जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो हर साल बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 2% है। अभी रिसेंटली जो न्यू डाटा आया है उसमें पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 1.9% है, जो कि एक मेगर पॉइंट डेसिमल डिक्लाइन है, कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है। तो जैसा कि जो है हमने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 2050 तक जो है 366 मिलियन हो जाएगी, विच हैज़ वेरी डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी। तो अगर हम कुछ मेजर्स की बात करें तो मेजर्स में सबसे जो बड़ी मेजर्स है या जो सबसे बड़े स्टेप्स हैं वो जो है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है वो गवर्नमेंट ने करनी होती है, उसके बाद फिर जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन जो है वो लाने चाहिए और इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म का काम करना चाहिए कि इसके लिए अगर हमें डोर टू डोर कैंपेन भी करना पड़े, स्पेशली जो वेमेन हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करें और फीमेल को जाके एजुकेट करें और उनको बताएं कि फैमिली प्लानिंग क्या है। तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Thank you.